shall have the national anthem, and I shall request you all to kindly rise at that point, following which we shall have the lamp lighting ceremony and the formal proceedings shall follow. That in order to survive, he must protect it. Brought together by and for our common ground, Earth, the home we share. Ladies and gentlemen, this conference brings together learned luminaries of the legal fraternity, policymakers, academicians, delegates from India, Norway, Hawaii, Philippines, Nepal, and Brazil to address the global climate crisis by exploring the legal framework safeguarding the constitutional rights while promoting sustainable development and environmental justice. Thank you very much for adding to this conference by your gracious presence here this morning. Another 10 minutes that we expect to unveil the formal proceedings for the inaugural session.
requesting you all to kindly settle down, drawing the attention of everybody who's standing. Please settle down. Ladies and gentlemen, the chief guest is waiting right outside the auditorium. Kindly settle down. Corridor 2B clear, please, for the band. Ladies and gentlemen, Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, gracing this momentous international conference, and the esteemed dignitaries joining us. Requesting you all to welcome them with a resounding round of applause. May I request you all to kindly remain standing for the national anthem. Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, and distinguished dignitaries on the dais, welcoming the eminent guests for this session to please grace the dais. To unveil this momentous international conference on environmental laws and constitutional rights, a global perspective. To inaugurate, may I please request Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, to kindly light the ceremonial lamp. May I please request the esteemed dignitaries on the dais to kindly join in. Requesting Honorable Mr. Justice B.R. Gavai, the Honorable Mr. Venkataramani, Honorable Ms. Justice Ritu Bahari, and the esteemed dignitaries on the dais to kindly do the honors of lighting the ceremonial lamp.
Thank you very much, esteemed dignitaries. May I now invite Honorable Mr. Justice Swatantra Kumar, former Judge, Supreme Court of India, former Chairperson, National Green Tribunal, to kindly deliver the welcome address. Good morning to everyone. Honorable dignitaries on the dais and the august audience. As you all can see, we assemble here on this auspicious day to discuss about the most sensitive topic of the globe today. That is the environment, its protection, and the laws in relation to the Constitution, not only of our country, but all over the world. It is universally stated that we need nature for our existence. The nature does not need us for its existence. The humans are mere lessees of this earth, while the nature is the owner of this planet. Wisely advised, humans should never underestimate the power and fury of nature, some of which is visible to us today, everywhere, even just few miles away from the place where you're sitting. I am reminded of the words of Gandhiji, who said, "Earth provides enough to satisfy every man's need, but does not every man's greed." Any person on this earth has still to say that you should not protect nature. Ladies and gentlemen, I wish to share with you that one fine morning, an elderly person, but surely handsome looking, with a nice turban of the Rajasthan, cycled to the Parliament of India. He entered the Parliament and corrected the conduct of the members of the House as if he was the chief whip of the Parliament. Not only this, then he proceeds further and participates in the proceedings of the House, discussing minute details of the finance and corporate sectors and the matters of the House. It did not end there. He was awarded the Parliamentarian Award in 2013, and thereafter, in 2022, he became the Law Minister and Justice with independent charge of this largest democracy in the world. I welcome you, Honorable Law Minister, on behalf of the university, the chairperson, and this august gathering, and particularly myself. And we cannot even express our gratitude to you for having spared time to come here after your so busy schedule in Delhi. Thank you for coming, and I welcome you. Sustainable development is the essence of environmental protection and conservation to strike a balance between the development and the protection of natural resources. You need the one who cogent analysis can preserve natural resources and still provide for human requirements. I am really elated to state before this august gathering the judge who unequivocally averred this principle in his very recent judgment
in the case of T.N. Godavan versus Union of India as early now as 26th of April 23. Honorable Mr. Justice Bhushan Ramkishan Gavai, who has unique distinction of being elevated to the highest court of the land without being appointed as the Chief Justice of High Court. It is his hard work, legal acumen, and extraordinary contribution to the administration of justice in our country which brought him this remarkable honor. He is known for his judicious, equitable approach in discharge of his judicial functions, and he can really be a contributor to the nation, is even exhibited with the on and off the light, which is welcoming him. And I have the privilege of working with him as a brother colleague in the Bombay High Court, where he was one of the youngest judges. Not that he looks any older today, but he was really young at that time. So I welcome you, Justice Gavai, and it is our privilege that you have been kind enough to come to this conference. Remembering the young days of my profession as a lawyer, where one would be running in the corridors of the Supreme Court and the High Court, more often than not, you will meet a senior advocate with a smiling face and responding to each member of the bar. I am mentioning that Honorable Shri R. Venkataramani, today he holds the highest constitutional post of being the first law officer of the country, being the Attorney General for India. In a short duration, he has established his mark for himself, well versed with all branches of law and truly described by the members of the bar as soft-spoken but assertive. He has established himself as one of the most erudite and institute lawyers. I welcome you, Mr. Attorney, and it's really gracious of you to have come here. Honorable Mr. Justice Ritu Bari, I know her from her practice days. I wonder whether she was a hard-working lawyer or a more hard-working judge. But both ways, you need to compliment the women's strength in the judiciary of the Punjab and Haryana High Court, to which she is a major part. I welcome you, Madam Bari, for all this. Other two people on the stage, Mr. Satnam Singh Sandhu, the Chancellor of the University, and Madam Himani Sood, the Vice President of the Chandigarh University. I don't think I need to welcome them because they are a party of the welcome team itself. But still, mentioning their contribution to this conference, I do appreciate the effort that they have put in. Having said few words about the dignitaries on the dais, I would be erring in my duty if I didn't welcome all of you, because I wonder what we will do on the dais if you were not there. So thank you all for being here, the print media, electronic media, members of the legal fraternity, the Bar Association of the High Court, Bar Association of Chandigarh, Ropar, and everywhere. I must compliment the members of the bar who have been very kind to recognize the importance of today's conference. It is international, and we are going to have round about 7 countries participating in this conference. Most of them have to be speaking through the video. We may be sort of playing extracts of their speeches to show you. Some of them are present here. The main purpose of this conference is, as you know, India's rich ancient history has had a special
place for environment. As an essential life giver and sustainer, nature had the divine status in our rich heritage. Vasudeva Kutumbha, the philosophy of the world as one family, has been most prominent among ancient Indian literature. I cannot but help to mention the words of the Honorable Prime Minister, who one of the international conferences at the Vigyan Bhavan cited this ancient principle and enunciated to a limit how significant it is for existence of the humanity at the global level today. Please tend to protect environment and don't destroy it. The Constitution of India has been called a living document because, like all living organism, it must evolve and adapt the changing circumstances. As the environmental struggles began and started intensifying, it became imperative for the Constitution to evolve and tackle the situation necessary. And that's how the principle of sustainable development, intergenerational equity came into play in the environmental jurisprudence. Environmental jurisprudence in India has come a long way since independence. Through plethora of legislations, judicial activism, and grassroots level policy changes, fundamental status has been provided for a right to clean and healthy environment for human and animals alike. It took a collective global effort to unite the countries and take collective measure to tackle the environmental issues. From Stockholm Conference in 1972 through Rio in 1992, finally 2016, the Paris Agreement, it was signed as the UN Climate Change Conference in Paris. This is the legally binding document and aims to limit the most becoming environmental threats we face today, global warming. If you kindly have a look at the world map, today around about 150 countries in the world have incorporated and introduced into their respective constitution the right to clean and decent environment as a fundamental right, directly or indirectly. That shows us the human consciousness as to what we are looking for and how it is likely to come. As I mentioned in the opening, ladies and gentlemen, we need nature. Nature doesn't need us. You see the fury of the nature just across few hundred miles from here. The places have been wiped out. Our ancient culture worshipped trees, mountains, rivers. Why? It was not something, an illogical faith. It was the true sense of human respect for the natural resources, and that's why they were maintained. Just to conclude, while thanking the audience and the people, dignitaries on the dais, I would request that please kindly show your concerns for the protection of the environment openly, unhesitantly, and boldly. You will protect nature, and the nature in turn will protect not only you, but your generations. Your next generation, little children, will not have to wear masks to their school. Give them fresh air to breathe, fresh mind to read, and fresh nation limits to progress. India is a great country, and we all should be proud of belonging to such immensely great motherland, and to protect her should be our utmost fundamental and constitutional duty. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you very much, sir, for that warm address. May I now invite Honorable Chancellor Satnam Singh Sandhu, Chandigarh University, to kindly address us. Namaskar.
आज के इस इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस के चीफ गेस्ट ऑनरेबल यूनियन लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, गेस्ट ऑफ ऑनर ऑनरेबल जस्टिस B.R. गवई जी, ऑनरेबल जस्टिस राजेश बिंदल जी, ऑनरेबल जस्टिस V. कमेश्वर राव जी, ऑनरेबल श्री वेंकटरमणी जी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ऑनरेबल मिस जस्टिस रितु बारी जी, ऑनरेबल जस्टिस M.S. रामचंद्र राव जी, और आज की इस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित सभी आदरणीय जज साहिबान, सीनियर एडवोकेट्स, फैकल्टी मेंबर्स और पेरेंट्स स्पेशली जो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे पधारे हैं, और डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, जी हाँ करता हूँ आज के इस कार्यक्रम में शमूलियत के लिए आप सभी का। पंजाब की इस पावन और पवित्र धरती पे ये कॉन्फ्रेंस उस टाइम पे हो रही है जब इंडिया G20 प्रेसिडेंसी की मेज़बानी कर रहा है, और हमारे लिए ये गर्व की बात है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमेशा ही अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ के ऐसे इश्यूज़ पे, ऐसे सब्जेक्ट्स पे आगे आती है और काम करती रहती है। और एनवायरनमेंट को लेके हम पिछले 3 साल से, ये 3rd एडिशन है, इंटरनेशनल लॉ कॉन्फ्रेंस हम करवा रहे हैं। पंजाब की इस पावन पवित्र धरती पे मैं गुरु नानक देव जी की श्लोक से अपनी बात शुरू करना चाहूँगा। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। हमारे गुरुओं ने, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने बहुत पहले, UN की होंद से भी पहले हमें जो लेसन दिया, हमें जो टीचिंग्स दी कि नेचर, जलवायु हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, हमने कैसे इसकी हिफाजत करनी है और इसका सत्कार करना है, इसकी पूजा करनी है। लेकिन ग्रेजुअली सिविलाइज सोसाइटी की ग्रोथ में लॉ इन्फोर्समेंट का मैकेनिज़्म आया, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए लॉज बने, और आज हम लॉ कॉन्फ्रेंस एनवायरनमेंट के मुद्दों पे ही कर रहे हैं, लॉ जो एनवायरनमेंट के लिए बने। लेकिन मैं समझता हूँ कि जितनी देर इसको मास मूवमेंट नहीं बनाया जाता, जितनी देर पब्लिक नहीं जुड़ती, क्योंकि नेचर को किसी बाउंड्री, किसी बॉर्डर के अंदर नहीं देखा जा सकता। नेचर विशाल है, असीम है, और एनवायरनमेंट का एजेंडा जो है, एनवायरनमेंट का जो इशू है, ये ग्लोबल इशू है, ये किसी एक देश या एक कंट्री के लॉ से रिलेटेड नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये लॉ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इसके साथ ही मुझे ये बताते हुए भी खुशी महसूस हो रही है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हमारे देश की पहली यूनिवर्सिटी है जिसने एनवायरनमेंट के मुद्दे पे सोशल इंटर्नशिप शुरू की है। एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर स्टूडेंट के लिए ये कंपलसरी है कि वो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए फील्ड में जाके काम करे, ताकि वो उस चीज़ का एहसास कर पाए, और इसके साथ जो टीचिंग है एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की वो भी साथ चलेगी। तो मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ, और ख़ास करके जस्टिस स्वतंत्र कुमार जी जिनकी गाइडेंस में हमारा लॉ इंस्टीट्यूशन जो है काम कर रहा है, इनका भी धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार आदरणीय महोदय। Ladies and gentlemen, it is indeed an honor to have amidst us the erudite persona, Honorable Mr. Venkataramani, the Attorney General of India. May we please hear you, sir. Good morning to everyone. I must first thank Justice Swatantra Kumar for calling me here to be part of this very engaged conversation
on a subject of deep importance for each and every one of us. For long, both before and after Adam Smith wrote The Wealth of Nations, we have been engaged, humanity, all around the globe, engaged on talking about the wealth of nations. Our focus was on meeting human needs through development of the wealth of nations. But little did we realize that the wealth of nations cannot be and need not be necessarily the only indicia of human fulfillment and comfort. Now we begin to talk about the health of nations, where a focus on the health of nations is missing. I'm sure the developmental goals of humanity all around can miss the most important point about what does it ultimately mean comfort for meeting human needs and human solace. Therefore, we need to talk about not only the wealth of nations in isolation, the health of nations in isolation, but a marriage of both. Then we've been able to manage our definitions and statutes reasonably well, except, of course, when courts find fault with the definitions of legislatures. But we're not in a position to define something very important, namely defining sustainable development. We keep talking about it. We talk about proportionality principles. We talk about all the other environmental principles and doctrines, which will probably throw some light and guidelines on how courts and policymakers can enter into the debate and defining what is sustainable development. But that's an enigma. That's a challenge. It's a civilizational challenge. And as long as, for instance, I talked about Adam Smith, and for a long time in European continent, the whole idea was about bringing about equality, an egalitarian society, where all of us would be equal, but equal in what respect? In having access to resources of nature, social wealth, and socially generated wealth. But we forgot very important element of meeting all these goals and ends. But how do we combine all of energies towards promoting these values by engaging on the resource of nature as the most sustainable product of humanity? So when that famous writer Rachel Carson wrote in her Silent Spring in 1962, I quote, "If the Bill of Rights contains no guarantees that a citizen shall be secure against lethal poisons distributed either by private individuals or by public officials, it is surely only because our forefathers, despite their considerable wisdom and foresight, could conceive of no such problem." And then she spoke much later in a public speech before she did. She met her death. She testified before the President Kennedy's Scientific Advisory Committee. And what did she urge? She urged the following: a much neglected problem, that is the right of the citizen to be secure in his own home against the intrusion of poisons. Poisons does not mean only the physical poisons. Intrusion of poisons applied by other persons. I speak not as a lawyer, but as a biologist and as a human being, but I strongly feel that this is or ought to be one of the basic human rights. So when you assemble here in similar engagements and looking at very challenging aspects of sustainable development, I suppose we engage ourselves on understanding what are the best social, legal, and other instruments or tools which can be applied and be pressed into service to carry forward this very daunting challenge of defining sustainable development. When lawyers began to talk all over the globe in the context of the increasing constitutionalization of environmental rights, some of the basic questions are asked us: how much of constitutionalization? And what extent of constitutionalization can take environmental laws and environmental legal applications to the utmost limits of policy making, scanning policy making, so on and so forth? We don't have definitive answers. Maybe the world all over,
Several constitutions have enacted environmental law principles, values, obligations into their constitutions. That is one important story. The important of the story is that we think the more we bring in a value or a principle or a doctrine into a constitution, the more we are moving towards certainty and then moving towards our goals. I'm not very sure about that. There are different thoughts on this. But one thing is certainly important to note. The more we talk about constitutionalization of rights, whether private rights in the private sphere or rights in the public sphere, one thing that happens is we have two models of application of this principle. One is a judicially driven model, other is a legislatively driven model. There are two schools of thought again here. Those who belong to the old school of thought that too much of judicially driven model has problems. Because we talk about all those well-known principles in constitutional law, judicially manageable standard, so on and so forth, and it is essentially the primary duty of the legislature to lay down policies. The other school of thought which says a contra-adjudicative proposition is, let us have directive principles of environmental obligations. And let us make legislatures and executive more and more accountable. The accountability principle is still at large today. Therefore, we are still exploring which are the models, either this or the other model, or a combination of these two models, or any other third model which will work. I think we need to talk about that. Of course, India can take a lot of pride about how, from Godavari and even the MC Mehta era onwards, I remember in 1982 or 83, appearing in the Supreme Court in a case regarding sand digging in a river in Maharashtra. The court asked me a question, how do you bring all these cases to the Supreme Court? I could only answer probably in a day will come when this court will be engaged more and more of these questions. And it's happening. Our high courts and Supreme Court are engaged more and more in policy making in environmental law obligation realm. And why are they doing that? And therefore we need to engross upon these very interesting, very challenging dimensions of, when you look at social and economic rights on the other hand, we have the same kind of debates. Several constitutions do not have social and economic rights as justiciable. But over a period of time, like US Constitution does not even have social and economic rights as justiciable. But over a period of time, we have transformed directive principles into something hugely justiciable. And how did it happen? Not because of legislative intervention, but because of judicial engagement. So we seem to think that the more we have of judicial engagement in policy making, we are closely nearing the goals of sustainable development. I have some questions to ask there. All of us must ask these questions. Because the models we are trying to build upon, the more we place trust, the more we place burdens, the more we place extraordinary investments on one being alone of our institutions, we definitely will have issues and challenges. But the more we take it away from this institution, we have equal challenges. Therefore, the kind of narratives and dialogues we have necessarily in constitutional law, I suppose, judicial restraint, separation of powers, all those principles, I think, must be kept aside for a time being because we are looking at something very different. Environmental law is not certainly like social and economic rights. It concerns each and every one of us. Someday, as Swatantara Kumar was talking about, nature does not need us. It famously said, God said, let Milton be, and there was light. I hope nature said, let there be life, and human beings came. I hope one day nature does not say, why did I say that? Therefore, it's something very important for us to realize that constitutional law doctrines, legal interpretation principles, which were evolved and applied in distinct fields of law and application of law, will have to probably very selectively applied, very carefully scrutinized, and we'll definitely make mistakes if we don't do that. We have any number of international instruments which have come post-1992. There are regional investments, there are regional instruments, global instruments, so on and so forth. And all of them talk about one very important thing. How do we engage all humanity in this very fundamental challenge of being part of nature, but being alienated from nature? When you say alienated from nature, we treat nature as something distinct from us, and therefore we try to exploit nature without any limitation. When the Club of Rome talked about the challenges of meeting, very soon we are already meeting those challenges.
And despite a large number of international conventions at the global level and regional level, look at the Biodiversity Convention. Somewhere in 1992, then in 2010, they had a plan of action about biodiversity. And I was recently looking at an attempted definition. How do you look at the preservation? It's very interesting. It talks about sustainable use definition and the Convention of Biodiversity. It says sustainable use are the use of components of biological diversity in a way and at a rate, both are important, in a way and at a rate that does not lead to the long-term decline of biological diversity, thereby maintaining this potential to meet the needs and aspirations of present and future generations. How much of wisdom, how much of the necessity to bring in doctrines and principles are involved in this definition? So you can probably spend a whole day on understanding the definition of sustainable use. And therefore, what I mean to say is, well, I don't want to go into the depths of the issues which are before us. We are trying to flag some of the issues. The idea of having an inaugural function is to flag some of the issues and to call upon minds that are engaged here to more and more deeply engage themselves on each one of those flagged issues. I think finally to say that the challenge is not before us as individuals. And if only I can say that there are two important challenges before humanity today. One is the need to preserve liberty. And what does it mean? Creativity, innovation, and all that values which liberty can have. And when creativity and innovation disappear, I don't think there is any civilization. On the other hand, there's a challenge of equality, equal regard for all human beings. How do you really meet these two challenges? And while meeting these two challenges, the further challenge is, can we not say that all of us, individually and collectively, say, what is my need? What exactly is the way I talk about my comfortable levels of living? If today we have to talk about an automobile technology, and all of us have an equal access to an automobile, does it make any sense? So we talk about public transportation system. There are any number of human needs which economy tries to meet. So there are poor man's footwear and a rich man's footwear. So there we have economic distinction, the poor man's needs and the rich man's needs. As long as distinctions remain, I think sustainable development definition will continue to be a challenge. Therefore, unless we look into all these connected threads, somebody talks about the environmentalism of the poor. All those aspects will have to be necessarily gone into. So the interrelationships, what economists or sociology call about the polycentric dimensions of decision making in contemporary policy making. Environmental law is one such polycentric aspect. So this polycentric aspect cannot be forgotten. Therefore, while we certainly appreciate and congratulate the great contributions made by courts in evolving environmental jurisprudence in our country, I look at generally globally it's happening, but I think it's happening at one level. What is that level? We are trying to talk about values of environmentalism. But besides promoting values of environmentalism, the polycentric aspect will have to be certainly addressed too. And I'm sure each and every one of us here and assembly here will be called upon and very, very passionately and to be committedly involved in this conversation. And as I said, individually and collectively, if every one of us is able to produce some solution, I'm sure the legislative policy making, the judicial interventions will make a lot of sense to each and every one of us. Let us not be alienated from these two, policy making and judicial intervention, which is precisely what is happening today. The amount of participation people have in this is very limited. Let there be a larger engagement of each and every one of us in both these institutions and tools. And with that appeal, I would like to end my conversation with you today. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your inspiring and sagacious address. These words by Kofi Anand rather seem to be stirred. Our biggest challenge in this new century is to take an idea that seems abstract, sustainable development, and then to turn it into a reality for the people across the world.
striving in pursuit of the same. Ladies and gentlemen, it is indeed overwhelming to have with us Honorable Mr. Justice B.R. Gavai, the Judge Supreme Court of India, the exemplification of judicial acumenship. May we please request you to address us, sir. The chief guest of today's function, Honorable Shri Arjun Meghwal ji, the Minister for Law and Justice, Government of India, the learned Attorney General for India, Honorable Shri Venkatramani ji, the backbone behind this conference, my Chief Justice, Justice Swatantra Kumar, Mrs. Swatantra Kumar, the Chancellor of the University, Shri Satnam Singh Sindhu, Professor Himani Sood, present in the audience, the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, Chief Justice M.S. Rao, my esteemed colleagues from the High Court, Justice Kameshwar Rao, Justice Arun Palli, Justice Dinesh Sharma, Dr. Arun Patil, the Vice Chancellor of the University, Shri Amol Ratan Singh, the former Advocate General for State of Punjab, the distinguished senior lawyer, Mr. Chima, various dignitaries present in person and through video, the respected members of the faculty, the members of the Bar Association, and last but not the least, the dear students present here. It gives me a great pleasure to be here with this August morning, to be a part of International Conference on Environmental Laws and Constitutional Rights, a global perspective. I must, at the outset, congratulate and thank the organizers for organizing the conference in such a large way on such an important aspect. I must also congratulate Honorable Justice Swatantra Kumar, who has been behind this conference, and without whose initiative, I don't think that this conference would have been such a great success. As all of us know that in the 21st century, with innovation and modernization taking the world by storm on an everyday basis, we have reached a consensus that now more than ever, the most pressing issue is that of environmental protection. With the threat of global warming and increased loss of biodiversity looming over us, it is extremely pertinent that we discuss how to remedy the same. While the challenge to pollution is a global one, the impacts are overwhelmingly felt in developing countries. About 95% of adults and children impacted by pollution-related illnesses live in low and middle income countries. Often the waste of pollution affects us, can be lost on us in the short term or even remain underreported. For instance, around 2.4 billion people worldwide, that is around 1/3 of a global population, cook using open fires or inefficient stoves fueled by kerosene, biomass and coal, which not only generates harmful household air pollution, but also is a cause for many serious illnesses. There are estimated around 3.2 million deaths in 2022, with 237,000 deaths of children under the age of 5. According to certain studies, a person's exposure to pollutants in India could be 13 times higher inside the home than outdoors. Throughout history, human beings have always preferred to live in a societal structure, striving for development and progress. However, as we have witnessed, this progress often comes at the cost of our natural surroundings. In this pursuit, we have often overlooked the consequences our actions have on the environment. Thus, recognizing the importance of environmental protection,
the Indian Constitution and various international agreements give primacy to the issue in hope that our fundamental and human rights continue to be safeguarded. In fact, the environmental protection has always been historically a part of our cultural values and traditions. In the Atharva Veda, it is said that a man's paradise is on earth. This living world is the beloved place of all. It has the blessings of nature's bounties. Live in a lovely spirit. Even the Jai Agnams depict nature in a very unique way, as it says that 5 main elements of nature, Prithvi, that is land, soil and stones, Jal, water resources including cloud, Agni, fire, Vayu, air, and Akash, that is the sky, are the living creatures and must be treated as living beings. In fact, our collective history reveals that emphasis laid on the protection of the environment is not merely anthropocentric, but also ecocentric in nature. Since today's chief guest, the Honorable Minister for Law, comes from Rajasthan, it reminds me of a story of Amrita Devi. As way back in the 1730, the king of Marwar had sent soldiers to cut the khejri trees for building his palace. But Amrita Devi and 363 villagers, they gave up their lives so as to protect their trees. The last words that Amrita Devi uttered before giving up her life was, and I quote, "Sar sante ruk reho, to bhi saste jaan." If a tree is spared at the expense of one's life, it is still worth it. This is the background that we have, that is the love that we have for trees, for environment. And it is the Amrita Devi story in 1730 which gave inspiration to the Chipko Andalan in 1970. Since we are also considering the international aspects of the matter, Justice Swatantra Kumar has already referred to the Stockholm Conference of 1972, which can be considered as a turning point in the fight for environmental protection, with nations coming together to combat the threat posed by unregulated development, observing that, and I quote, "Man has a fundamental right to freedom, equality, and adequate conditions of life in an environment of quality that permits a life of dignity and well-being, and that man bears a solemn responsibility to protect and improve the environmental for present and future generations." As Justice Swatantra Kumar held that we are only the lessees, not the owners of the resources of the earth. As all of us know, following the Stockholm Conference, various legislations like the Wildlife Protection Act of 1972, the Water Prevention and Control Pollution Act of 1974, the Air Prevention and Control of Pollution Act of 1981, and the Environment Protection Act of 1986 were enacted. It has been clearly stated in the preamble of these acts that the purpose of their enactment was to implement the decisions taken at the United Nations Conference on the Human Environment held at Stockholm. There have been various other conventions. Some of them are the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna in 1973. The main aim was to prevent international commercial trade in endangered species or products derived from them. Then there was the World Charter for Nature in 1982, which aimed at, I quote, "ecosystems and organisms, as well as the land, marine and atmospheric resources that are utilized by man, shall be managed to achieve and maintain optimum sustainable productivity, but not in such a way as to endanger the integrity of those other ecosystems or species with which they coexist." Then thereafter, in 1985, the Vienna Convention for Protection of the Ozone Layer defined sustainable development as development that meets the needs of the present without compromising
the ability of future generation to meet their own needs. This is the concept that we have to protect the earth, the ecosystem for the future generations. Then the United Nations Conference on Environment and Development, also known as Earth Summit, held in Rio de Janeiro in 1972, formed another pivotal moment in recent history, which hopes of achieving sustainable development by reduction and elimination of unsustainable patterns of production and consumption, promotion of exchange of scientific and technological knowledge, compensation for adverse effects of environmental damage, adopting the precautionary and polluter pays principle with environmental impact assessment as an instrument to monitor the likely environmental effects. Then the UN Framework Convention on Climate Change of 1992 is another important international milestone. The convention embraces the principle of common but differentiated responsibilities and is considered the parent treaty of 2015 Paris Accord, which seeks to curb the increase in global average temperature to well below 2 degrees centigrade above pre-industrial levels and pursue efforts to limit the temperature increase to 1.5 degrees centigrade above pre-industrial levels. Since we are considering the constitutional rights, it will be apt to refer to Article 47, which is a part 4 of our Constitution, that is the directive principle. It puts an obligation on the state that it shall regard the rising levels of nutrition and standards of living of its people. The primary duty of the state shall be to improve public health. We are seeing that especially post-COVID-19 pandemic, with the risk of deadly pathogens being uncovered due to climate change and global warming, the provision has been interpreted to mean that the state shall take effective, adequate, and necessary steps to improve the health and standard of living of all and promote awareness in the context of environmental protection as well. In pursuance to the Stockholm Declaration, the Constitution was also amended to insert Article 48A through the 42nd Amendment. The article casts a duty upon the state to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. In the same context, Article 51A specifically deals with the fundamental duties of the citizens to protect and improve the natural environment, which includes the forests, the rivers, the lakes, the wildlife, and to have compassion for living creatures. Like the duty of the state, it is the duty of all citizens of not only protecting the environment, but also taking measures which are adequate enough to improve the environment. As the learned attorney referred to in his speech, it is a collective approach that each of one participation needs to ensure that the environmental issues are taken care of. However, in the recent history, the most important manner in which the norms of environmental protection are enforced is through interpreting them through the lens of fundamental rights under Part 3 of the Constitution, being very closely linked to concept of the equitable development for all. As held by the Supreme Court in the case of Maneka Gandhi, it is not the explicit rights which are specifically provided in Part 3 are the fundamental rights. It has been held that it is only illustrative, and all such rights which could be culled from the trinity of Article 14, Article 19 and Article 21 together should be emerged as the fundamental rights, and therefore we see that Supreme Court in the catena of cases of Maneka Gandhi of MC Mehta 1, 2, 3 has evolved so many rights which could never have been construed at the inception of the Constitution to be fundamental rights, like right to pollution-free environment, right to potable water, right to food, right to health, and so on. In the case of Vellore Citizens Welfare Forum versus Union of India, where in response to large-scale pollution caused to the river Polar due to the discharge of untreated effluents by the tanneries and other industries in the state of Tamil Nadu, the importance of the precautionary and polluter pays principle
was recognized. It was observed that while the constitutional and statutory provisions protect a person's right to fresh air, clean water, and pollution-free environment, the source of the right is the inalienable common law right of clean environment. In MC Mehta versus Union of India, the case popularly known as oleum gas leak case, the court was concerned with regarding the liability of a corporation due to the injurious consequences of hazardous activities conducted by it. The court held that a corporation owes an absolute and non-delegable duty to the community to ensure that no harm results to anyone on account of the hazardous or inherently dangerous nature of the activity which it has undertaken. Extending the principle of strict liability in Rylands versus Fletcher, the court for the first time enunciated the principle of absolute liability of corporations when they undertake hazardous and dangerous activities. Such activities, according to the court, should be allowed only on the condition that the enterprise indemnifies all those who suffer on account of the carrying on of such hazardous or inherently dangerous activity, regardless of whether it is carried on carefully or not. In another MC Mehta case related to Taj Mahal trapezium zone, the Supreme Court, observing the damage caused by the gases like sulfur dioxide emanating from the nearby chemical factories and refineries, which resulted in acid rain, the court applied both the precautionary and polluter pays principle and directed the industries which are not in a position to obtain gas connections to stop its functioning with the aid of coke or coal in TTZ and relocate themselves. In rural litigation entitlement versus Kendra, the Supreme Court, acting upon a letter detailing reckless and illegal mining operations that had reduced forest cover in Mussoorie Hills, the court directed operations of the most dangerous mines to be stopped and urged the relevant authorities to consider environmental concerns and implementing adequate safeguards when granting mining leases. It was observed that preservation of environment and keeping the ecological balance unaffected is a task which not only governments but also every citizen must undertake, as it is a social obligation and fundamental duty cast on all citizens under Article 51A(g) of the Constitution. In Jagannath versus Union of India, observing that the traditional rice, shrimp, rotating aquaculture system previously used by Indian fishermen had begun to give way to more intensive methods of shrimp culture, with more than 80,000 hectares of land having been converted to sheep farming, the court considered various studies and documented issues of loss of agricultural land and mangroves, obstruction of natural drains, salinization, restriction of natural seed resources, use of drugs and chemicals, extraction of groundwater, and loss of biodiversity. As such, the court directed constituting an authority to protect ecologically fragile coastal areas and held that agricultural lands, salt pan lands, mangroves, wetlands, forest lands could not be converted for construction of commercial shrimp culture ponds. The doctrine of public trust and protection of the commons is also another principle that has been followed from time to time. As was held in the Association for Environmental Protection versus State of Kerala, in relation to a construction on the banks of the Periyar River, the court observed that natural resources, including forests, water bodies, rivers, seashores, etc., are held by the state as a trustee on behalf of the people and especially the future generations. These constitute common properties and people are entitled to uninterrupted use thereof. The state cannot transfer public trust properties to a private party if such a transfer interferes with the right of the public, and the court can invoke the public trust doctrine and take affirmative action for protecting the rights of people to have access to light, air, and water, and also for protecting rivers, sea tanks, trees, forests, and associated natural ecosystems. As a matter of fact, I must say with pleasure that I was a part of the bench which saved the Sukna Lake at Chandigarh.
I also had the privilege of hearing a matter concerning the heritage status of Lee Carbozan's Chandigarh, that is the Chandigarh, the beautiful city, wherein on account of rampant apartmentalization in phase 1, not only deviated from the original city planning, but also caused a strain on the available resources. While passing the directions that the effort should be made to preserve the heritage status of the city, we undertook an analysis of the effects of the rampant, uncontrolled urbanization, as was the case with the city of Bengaluru, and appeal to the legislature. The Honorable Minister is present here, and the executive and the policy makers at the center as well as the state to make necessary provisions for carrying out environmental impact assessment studies before permitting rampant urban development. As a matter of fact, Chief Justice Swatandra Kumar, as a chairman of NGT, National Greens Tribunal, National Green Tribunal, came to know only after he was the chairman of that tribunal, and he has rendered an human service for protecting the environment in the country. I recollect a matter when he was the chairman of the NGT and I happened to be the senior administrative judge at Nagpur. There was an issue with regard to the construction of a national highway between Nagpur and Jabalpur, and it was passing through the protected tiger areas, and we issued, applying the principle of sustainable development, we issued directions that there has to be mitigation measures which will not come in the way of the wildlife traveling from one side of the road to the other. Big underpasses of more than a kilometer or 2 kilometers were provided, and compensatory reforestation in 1:10. For one tree, 10 trees to be planted were issued. That has now become a role model throughout the country, and whenever the national highways or the railways pass through the protected areas, the mitigation measures for providing the ecosystem for the wildlife are being followed everywhere. As all of us know that conservation of biodiversity and prevention of deforestation are one of the most important facets of environmental protection that have been advanced through the court's judgments from time to time. In the Center for Environmental Law Worldwide Fund versus Union of India, in regards to the protection of Asiatic wild lions and endangered species, the court observed that long-term survival and to protect the species from extinction is rooted on ecocentrism, which supports the protection of all wildlife forms, not just those which are of instrumental value to the humans, but those which have intrinsic worth. A species-based standard, and not merely the standard of best interest of humans, is being accepted. Further, as all of us know that even before the various enactments were enacted, the Supreme Court, through the continuing mandamus in the case of T.N. Godavarnam versus Thirumpala versus Union of India, has issued numerous directions from time to time to protect the forest cover and preventing of illegal deforestation operations. I am having the pleasure of presently presiding the Green Bench that regularly hears these matters, and we regularly pass various orders with a view to protect the forest, to protect the ecosystems. Recently, though we have passed various orders that there can't be a hard and fast rule for providing ecosystem-sensitive zone for each of the protected areas, and it has to be area-specific. But however, we have issued directions that no mining activity should be permitted within 1 kilometer from the boundary of the protected areas, as it would endanger the safety of the wildlife. Another important aspect of environmental conservation is our ability to reconcile nature with this very pertinent human aspect. As a developing country, emphasis on equitable, sustainable development cannot be overlooked. While often nature and development are framed
to be at loggerheads with each other. The past experiments, whether on the basis of the directions of the court or otherwise, have shown that it is indeed possible to promote human development and ensure environmental protection at the same time. In this context, we can look towards the work of Professor Dr. Gajanan Muratkar, often referred as the Grassman of India, for habitat and meadows development, which was done by identifying local grasses, preparing a seed bank, creating mother beds, and introducing local grass systematically to create meadows. His work at Meghwal Tiger Reserve was a huge success, and his efforts were also replicated in other tiger sanctuaries throughout the country, as well as at Chitwan Tiger Reserve in Nepal. The United Nations Intergovernmental Science Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services reports warns us about the possibility of extinction of almost 1 million species in the decades to come. Internationally, many steps have been taken to prevent the same, aided by local communities, providing them with alternative sources of income as well as long-term measures. It has also been a long-standing practice in India to take the aid of the local tribal communities in preserving forest cover and biodiversity, as their heritage and customs are deeply interlinked with protection of the commons. Today's youth is especially cognizant of the need for environmental protection and are leading the fight against climate change. As a living document, our Constitution has come to encompass the principles of living in harmony with nature and has been so interpreted in reference to our fundamental rights and duties, collective actions, and global efforts, as well as individual actions in adopting sustainable practices, as is the need of the hour. With massive strides being made in the field of green energy as well, it rests upon us to learn, understand, and pursue such various alternatives. To the students present here, I hope that one day you shall be helming the movement towards a more sustainable future. To the conference attendees, I hope that the scintillating discussions that you will be having throughout the day will provide all of us with new and exciting ideas on how to approach the environmental protection. I am sure that deliberations in the conference would lead us to resolve that all of us together will strive towards a more resilient, healthy, and flourishing planet for all the living beings. Thank you very much. Thank you very much, sir, for your enriching insights and the exemplary address. Ladies and gentlemen, we are indeed exhilarant and privileged to have amidst us such esteemed dignitaries whose gracious presence and wisdom makes this international conference all the more epochal. And so, to present a token of our respect and deep gratitude, may I request Honorable Mr. Justice Swatantra Kumar and Honorable Chancellor Satnam Singh Sandhu to kindly felicitate Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, with a memento and a shawl. Requesting once again
Honorable Mr. Justice Swatantra Kumar and Honorable Chancellor Satnam Singh Sandhu sir to kindly do the honors. Many, many felicitations to Honorable Mr. Justice B.R. Gavai. Thank you, sir. And may I now please request Honorable Ms. Justice Ritu Bahari to please felicitate Honorable Mr. Venkataramani, the Attorney General of India, with a token of respect and our sincere gratitude. Ladies and gentlemen, the erudite persona. May I now please request Professor Himani Sood to please accord a very warm welcome to Honorable Ms. Justice Ritu Bahari, the Judge, Punjab and Haryana High Court, with Fulkari. A very warm token of our deep gratitude for your gracious presence at this epoch-making conference. Thank you, distinguished dignitaries. Ladies and gentlemen, we would now like to present to you an extract from the message as shared by Professor Dr. Christina Voigt, the University of Oslo Department of Public and International Law, the Chair IUCN World Commission on Environmental Law. May we I just want to be unscheduled speaker between for 1 minute because I just wanted to request the audience and the honorable dignitaries on the dais. You know, we have Honorable Mr. Justice Antonio Benjamin, who is the senior most judge in the state court of the Brazil, which is the highest court of the land. Then we have Michael Wilson from Hawaii, who is the former judge of the Supreme Court of Hawaii. Then we have Christina. She is a professor in Oslo University and ICUN chair. So she is an internationally recognized force. Then we have from Nepal, Mr. Anand, Justice Anand, who is now one of the senior most judges of that court. We are not disturbing by their messages. We'll do it later. But one message, just what they have to say about this conference. I would request her to play this 2 minutes, and please stop it in between because we'll request Honorable the Law Minister to give his thoughts. Sure, sir. May we have the AV, please? Many thanks to Chandigarh University and in particular Justice Swatantra Kumar for the very kind invitation to join this international conference on environmental laws, constitutions, and a global perspective. It is a very great honor to participate, even though only virtually, at this conference on behalf of the IUCN World Commission on Environmental Law and to provide this very brief address to the participants at this conference. I would like to send my sincere apologies for not being able to join you in person, although I really honestly would have liked to be there. We are facing a time of multiple environmental global crises. Climate change is gaining the momentum that scientists have long predicted. This summer in the Northern Hemisphere has seen record-breaking temperature after record-breaking temperatures. In Italy, in Spain,
in the United States. As we speak, several Greek islands are burning and the number of heat-related fatalities are increasing. India experienced record-breaking heat waves earlier this year, pushing India closer to the limit of human survival. But climate change is not the only problem. It's not the only crisis. In addition, there is loss of biodiversity, degradation of ecosystems, and deforestation due to land changes and agricultural expansion. And alongside of this sits global pollution, be it chemicals in air and water, or pressing plastic pollution, which to a large extent accumulates in the oceans and as microplastics bioaccumulates in the food chain. What is needed to address these multiple crises is a transformative change, and even here science is clear that a transformative change is a fundamental recalibration of how we do things across all sectors. Many thanks to Chandigarh University. Thank you very much. We shall bring to you the detailed message later on. And now, ladies and gentlemen, the moment has finally arrived, and it is my proud privilege to now invite Honorable Minister of Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal, to please address us. Khamagani Hukam, पधारे और हम सभी को संबोधित कर अनुग्रहित करें. धन्यवाद जी. नमस्कार, गुड मॉर्निंग एंड सत श्री अकाल. ठीक है क्या? मैं आपके साथ बात करूंगा. आर यू रेडी? थोड़े कुछ मेरे सवालात होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे जो आपसे मैं पूछूंगा. बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सरल है, जो आपको जानते हैं उनसे संबंधित है. ओके, शुड आई स्टार्ट? ओके, थैंक यू. It is my matter of great pleasure that Justice Swatantra Kumar, former Judge of Supreme Court of India, and Sri R. Venkatramana ji, Attorney General of India, are personally invite me to participate International Conference on Environmental Laws and Constitutional Right, a global perspective at Chandigarh University. अब मैंने लिखा तो ये है, लेकिन मुझे इन्होंने आदेश दिया था, ऑर्डर, कि आपको आना है. तो स्वतंत्र कुमार जी तो दे भी सकते हैं, जज रहे हैं इसलिए. और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी हमारे बहुत अच्छे, अब धीरे धीरे दोस्त बन गए हैं. ऑर्डर दिया तो मैंने कहा मेरा एक प्रोग्राम जयपुर है, मैंने वो कैंसिल किया, मैं यहाँ आया. तो आपको देख करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू. It is a privilege for me to participate in this conference with the galaxy of leaders from the legal fraternity, the judiciary, the bar, and the field of legal education. और पत्रकार साथियों, my heartiest gratitude to the distinguished dignitaries present here. Honorable Justice B.R. Gavai Sahab, Judge Supreme Court of India. Honorable Justice Swatantra Kumar ji, former Judge of Supreme Court of India and former Chairperson, National Green Tribunal. Sri R. Venkatramani ji, Attorney General of India. Sardar Satnam Singh ji, Sandhu, Chancellor of Chandigarh University. Justice Ritu Bahari ji,
Judge of Punjab and Haryana High Court, Professor Himani Sood, Senior Vice President of Chandigarh University. एक नाम और लेना चाहता हूँ, वो नाम ध्यान नहीं है, जो संचालन करने वाली जो महिला है, एंकर है, मुझे लगता है बहुत अच्छा संचालन कर रही है, आप ताली बजा सकते हो उसके लिए। Thank you. The international conference is being held on the most relevant topic of present times, as the environment is an issue which impacts the life of every living being on this planet. बस अब मेरा टॉपिक शुरू होता है। प्लेनेट, अब ये एक शब्द है जो यूज किया, और कभी एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने एक लेक्चर दिया। आप में से किसी को पता है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब का लास्ट लेक्चर कहाँ था? बहुत सरल है, लास्ट लेक्चर, और ऐसे पोडियम पे बोलते बोलते चले गए थे। ध्यान आ रहा है क्या? कहाँ था? शिलोंग। ताली तो बजाओ भाई। मैं तो सतनाम सिंह जी को कहूंगा इनको इनाम भी दें। हाँ, इनाम देंगे आपको, कुछ यूनिवर्सिटी आपको कभी बुला करके इनाम देंगे, अभी भी दे सकते हैं मेरे भाषण के बाद। टॉपिक क्या था जी? किस टॉपिक पे बोल रहे थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब? ऐसे ही एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट थी, IIM शिलोंग, और टॉपिक क्या था? अभी मैंने लास्ट में जोर दिया था अभी, प्लेनेट, लेकिन क्या था पूरा टॉपिक? टॉपिक था मेकिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ। क्या टॉपिक था? इसको याद करना जरूरी है जी, आज का जो सब्जेक्ट है उसी पे है, मेकिंग ए लिवेबल प्लेनेट अर्थ। वो बोल रहे थे कि हम चंद्रमा को में चले गए, कुछ अध्ययन कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, हम मंगल पे भी जा रहे हैं, लेकिन जीवन जीने लायक खाली पृथ्वी पर ही है। इसको हमें ठीक रखना पड़ेगा। और ऐसे पूछ रहे थे किसकी जिम्मेदारी, और नीचे चले गए। अब मुझे बताओ किसकी जिम्मेदारी? हम सबकी भाई, है या नहीं? है ना? तो अब अर्थ से शुरू कर रहा हूं। मैं जस्टिस BR गवई साहब को धन्यवाद दूंगा कि मुझे उन्होंने एक टॉपिक दिया, उस पर मैं बाद में आऊंगा, अमृता देवी का। लेकिन उससे पहले भी उन्होंने एक टॉपिक दिया, अर्थवेद का जिक्र किया, अर्थ का भी जिक्र किया। इन्होंने शायद जोर देके कहा, मैन्स पैराडाइज इज ऑन अर्थ, दिस लिविंग वर्ल्ड इज द बिलव्ड प्लेस ऑफ ऑल, इट हैज द ब्लेसिंग ऑफ नेचर्स। अब ये देखिए किस तरह की बातें जो आज यहां हो रही थी, उसमें अर्थ। और उन्होंने एक और चीज कही थी, मुझे पता नहीं कि ये हम कोई डिस्कस करके नहीं आए थे, लेकिन 5 एलिमेंट की बात भी उन्होंने कही। आपने ध्यान से सुना है क्या जस्ट BR गवई साहब का भाषण? 5 एलिमेंट क्या है? अर्थ, जिसको हम पृथ्वी बोलते हैं, सेकंड वाटर, थर्ड एयर, फोर्थ फायर, फिफ्थ स्काई। कुछ लोग इस 4 ही मानते हैं। वेस्टर्न फिलोसफर, अगर आप थोड़ा ऑस्ट्रेलिया साइड में जाएंगे, ये स्काई को कुछ नहीं कहते। लेकिन जो हमारे संत महात्मा हुए, उन्होंने 5 का 5 एलिमेंट। इसका मतलब हम एडवांस थे। ये 5 एलिमेंट जो आपके नेचर में है, वो आपके पास भी है। जो आपके पास बॉडी है ना, यू हैव ए बॉडी, क्या? अरे यस तो बोलो भाई। जो आपके पास फिजिकल बॉडी है, उसमें ये 5 तत्व हैं, जिसको कभी कबीर ने कहा बनारस से, कभी गुरु नानक ने देव जी ने कहा ननकाना साहब से, कभी बाबा फरीद ने कहा फरीदकोट से, बुल्ले शाह ने कहा अफगानिस्तान से, और वल्लूर ने कहा रामेश्वरम से। एक ही बात कह रहे हैं कि 5 तत्व प्रकृति में भी है और 5 तत्व हमारे शरीर में भी है।
तो आपको पता कैसे नहीं है जी? ये 5 तत्व इनको लेना पड़ता है आपको। अब क्या, अब मैं थोड़ा, ये ज्ञान मेरा एक मेरे गुरु ने दिया मुझे स्कूल में। ये इट्स यू कैन से टेम्पल ऑफ द एजुकेशन। तो जब टेम्पल ऑफ एजुकेशन में मैं जब यहाँ खड़े होकर के बोल रहा हूँ, तो जैसे सतनाम सिंह जी आपके गुरु हैं, ऐसे मेरे एक गुरु थे जिन्होंने एक ज्ञान दिया। कब? जब मैं स्कूल में था, और मुझे लगता है वो रिलेवेंट है आज। तो मैं बोल रहा हूँ, अर्थ हम क्या लेते हैं जी? अर्थ इस बॉडी के लिए जो अर्थ में उत्पन्न होता है अनाज, वो हम लेते हैं, तो हमें लगता है कि हम अर्थ तत्व को बॉडी में ले रहे हैं। फ्रूट्स, जो भी अर्थ पे पैदा होता है उसको हम लेते हैं, तो हमें लगता है हम अर्थ तत्व को ले रहे हैं। जल, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं वाटर, वाटर हमारी बॉडी में बहुत से लोग कहते हैं कि नेचर में 72% है, और लोग बोलते हैं हमारी बॉडी में भी कितना, इतना ही है क्या? डॉक्टर हैं क्या कोई? 72% ही है। तो वाटर इज मोर इंपॉर्टेंट। अब हमारे एक्शन के पॉइंट क्या होने चाहिए? आज हम इतना बड़ा वर्कशॉप कर रहे हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हमारे एक्शन के पॉइंट क्या होने चाहिए? जो एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा, प्लेनेट, लिवेबल प्लेनेट, अर्थ, इसको हम ठीक रखें, मतलब हम उसको पॉल्यूट नहीं करें। क्या हम ये प्लेज ले सकते हैं आज कि हम धरती मां को पॉल्यूट नहीं करेंगे? ले सकते हैं क्या? यस और नो तो बोलिए। छोटे छोटे एक्शन, प्लास्टिक को नहीं फेंकेंगे, कचरा ज्यादा नहीं करेंगे, ज्यादा हम धरती को खोदेंगे नहीं, बहुत ज्यादा हम यूरिया नहीं देंगे, ये सब चीजें छोटे छोटे एक्शन, तो हम अर्थ को ठीक रख सकते हैं। अर्थ हम लेते भी हैं। अगर हम जहरीली कोई चीज देंगे तो अन्न जहरीला होगा, खाएंगे तो हमारे अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें पृथ्वी को ठीक रखना है। वाटर, हम एक एक्शन लें कि नदी में जाएंगे तो हम साबुन यूज नहीं करेंगे। ले सकते हैं ऐसी फ्लैग? किसी नदी में नहाने जाएंगे तो हम साबुन यूज नहीं करेंगे। प्लास्टिक की कोई कपड़ा या कोई चीज नदी में नहीं फेंकेंगे। कर सकते हैं क्या? यस और नो? यस। और ये वाटर क्यों जरूरी है? देखिए, मैं अभी वल्लवर को जिक्र कर रहा था। ये चेन्नई से नीचे पांडिचेरी और मद्रास के बीच में समुद्र पे ही रहते थे। साउथ इंडियन सेंट थे। 2000 साल पहले लिख गए क्या? विदाउट वाटर देर इज नो लाइफ इन द वर्ल्ड। ये लिखा उन्होंने, तमिल में है, मैं इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर रहा हूं। और हमारे नानक देव जी क्या लिख गए जी? पावनु गुरु पानी पिता, लिख के गए कि नहीं गए? माता धरत महात, लिखे कि नहीं लिखे? इसका अगर हम अंग्रेजी में अनुवाद करें तो एयर इज द मास्टर, वाटर इज द फादर एंड अर्थ इज द ग्रेट मदर। ये नानक देव जी लिख के गए। नानक देव जी भी लिखे, कबीर साहब भी लिख के गए। अभी अमृता देवी जी का जिक्र आया, वो एक्शन भी करके गई। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन से एक्शन करके गए। फिर हम एक्शन क्यों नहीं करते? खाली सेमिनार में आना है क्या? कैसे वाटर का आप दुरुपयोग रोकेंगे? हमारे पुरखों ने क्या सिखाया? अगर आपको मुंह धोना है, मेजरमेंट था सर। इन एंशिएंट टाइम देयर वाज ए मेजरमेंट टू यूज द वाटर। अगर आपको मुंह धोना है तो 1 लोटा पानी, इट वाज ए मेजरमेंट। अगर आपको नहाना है तो 1 बाल्टी पानी, और अगर आपके पूरे दिन के लिए पानी की रिक्वायरमेंट है तो 1 घड़ा पानी। घड़ा समझते हो क्या? हाँ, जो लेकर के आते थे। मैं तो बचपन में घड़ा पानी भर करके लेके आता था। हाँ, ये मेजरमेंट। अब क्या हो गया? मैं एक बार एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में, जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर था, तो गया मैं कनाडा।
तो मेरे साथ एक आदमी था, मैं वो नाम नहीं लूंगा, सीनियर आदमी था। मैंने पूछा क्या कर रहे हो भाई? कि बोला नहा रहा हूं। टेलीफोन से कहा। आधे घंटे बाद पूछा भाई क्या कर रहे हो? बोला नहा रहा हूं। मैंने कहा यार ये आधे घंटे तक क्या नहा रहा है? तो पता चला कि शॉवर ही खोल रखा था। तो ये मिसयूज ऑफ वाटर नहीं है क्या साहब? है या नहीं? बोलो मुझे बताओ। आपको छूट मिल गई 5 स्टार होटल में, कितना ही पानी आप यूज करो, तो आप क्या 100 आदमियों का पानी यूज कर लोगे क्या? ये मिसयूज ऑफ वाटर है या नहीं है? है? यस और नो? है। तो क्या करोगे? अगर आपको पानी यूज करने की छूट मिली तो भी ध्यान रखोगे। यार एक अर्जुन मेघवाल मंत्री आया था, कह के गया था मेजरमेंट ऑफ वाटर, मुंह धोना 1 लोटा सफिशिएंट, नहाना 1 बाल्टी सफिशिएंट, ज्यादा ज्यादा 2 बाल्टी ले लो भैया। पूरी टूंटी खोल लेते हो आप यार। क्या अच्छा लग रहा है क्या? ताली तो बजा दो फिर, लग रहा है तो। इससे भी इन्वॉल्वमेंट होता है। वाटर, हम भी पानी चाहिए, प्रकृति में पानी चाहिए, हमें को भी पानी चाहिए। क्या हम ऐसा महसूस कर रहे हैं क्या कि अगर हमारे पोतों के पोते होंगे तो पानी भी नहीं मिले क्या? ऐसा तो हम नहीं चाहते ना, नहीं चाहते ना। तो हमें पानी के लिए भी एक्शन लेना पड़ेगा। एयर, इसको भी ठीक रखना पड़ेगा। प्रकृति में भी एयर है, हम भी लेते हैं। सुबह सुबह लोग को घूमने जाते हैं, रोशनदान होते हैं, कुछ लोग पंखा चला के एयर लेते हैं। लेनी ही पड़ेगी जी, नहीं तो हम मर जाएंगे। ये 5 तत्व बैलेंस में हमें लेने ही पड़ेंगे। अब आ गया आपका स्काई। ये क्या है जी? आप कहोगे ये शरीर में क्या है जी? मैं जो बोल रहा हूं, मैं अभी स्काई ले रहा हूं जी। ध्यान आ रहा है क्या आपको? स्काई का पूरा सिस्टम है शब्द से। आदमी जब बोलता है तो वो स्काई तत्व के साथ जुड़ जाता है। अगर वो नेगेटिव बोलेगा तो वातावरण नेगेटिव बन जाएगा। तो दफ्तर में आप बोलोगे ये अफसर खराब है, ये घर से पत्नी को लड़के आया, तो आप समझ लेना उस दिन वातावरण पूरा नेगेटिव आपके दफ्तर का बन जाएगा। आप अच्छा बोलोगे, ये हमारे तो साथी ठीक हैं, हमारे जज साहब भी ठीक हैं, यार वकील भी सारे ठीक हैं, तो उसी समय आपका वातावरण पॉजिटिव बन जाएगा। अब जब मैं बोल रहा हूं तो मैं इसका ही तत्व ले रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हर समय लेता रहूं। ये बैलेंस लेना पड़ता है। ये खाली 12% है हमारी बॉडी में, 72% वाटर है, तो बैलेंस लेना पड़ता है। अर्थ भी है, उसका परसेंटेज बाद में बता सकता हूं। इट इज ए साइंस जिसको हम स्पिरिचुअल साइंस कहते हैं। बहुत से संतों ने उसका अध्ययन करके बताया है। लेकिन मैं जब एक जगह कहीं पढ़ा रहा था तो मुझे एक महिला डिप्टी डायरेक्टर रिटायर्ड एजुकेशन से मिली। बोला आपने पुरुषों ने तो हमें बोलने के लिए मना किया, तो हमारा इसका ही तत्व तो आप खा गए। देखो हंसे ना आप। हाँ, तो अब मैं ऐसे बोल रहा था, तो मैं टीचर के रूप में रहता हूं, बोलता हूं। तो अब ये यहां मुझे ये मत मानो कि मैं मिनिस्टर हूं। मेरे पास जो ज्ञान है, मेरे गुरुओं ने ज्ञान दिया, वो मैं बताना चाहता हूं नई जनरेशन को। तो मुझे लगा ये क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, और मैंने भी सोचा 5 मिनट। तो उन्होंने कहा चुप क्यों हुए? मैंने कहा ये बात तो सही है कि पुरुषों ने कहा तुम जेठ से भी मत बोलो, तुम्हारे हस्बैंड से भी रात को बोलो, और हम तो बोलते गए और तुम्हें कम बोलने दिया। तो मुझे जो ज्ञान आया उसी समय वो आपको बता रहा हूं। महिलाओं को हमने कम बोलने दिया, एक परिस्थिति ऐसी बनी। उससे पहले तो बोलते ही थे। गार्की विवाद करती है ना हमारे से, लेकिन बीच में एक समय कालखंड ऐसा आया हमने कम बोलने दिया, घूंघट आ गया, बोलने कम दिया। लेकिन महिलाओं ने, क्योंकि जिंदा रहना था और आकाश तत्व लेना था, तो क्या किया महिलाओं ने? ग्रुप में गीत गाना शुरू किया, भजन गाना शुरू किया। कहीं डेथ हो गई तो रोने गए, तो ग्रुप में गए और जोर जोर से रहे, आकाश तत्व ले लिया, बैलेंस पूरा किया। नहीं तो जी नहीं सकते ना। तो उनको भी ठीक लगा, यार बात तो ठीक है। फिर आ गया आपका अग्नि। तो आप कहोगे अग्नि तत्व है, आप प्रकृति में तो है, हमारे यहां क्या अग्नि तत्व है जी?
एनर्जी आपके सूरज में भी है। हमने अभी दीपक जलाया, जलाया कि नहीं जलाया? सबने जलाया ना दीपक, ये अग्नि है जी। हम घर में भी दीपक जलाते थे, घर में ग्रुप में जोत करते थे, नारियल डालते थे, हवन करते थे, हमारी संस्कृति का पाठ था। लेकिन जैसे ये बंद हुआ, जैसे ये बंद हुआ तो अग्नि तत्व तो लेना था, तो लोगों ने क्या शुरू किया? सिगरेट पीना शुरू किया, बीड़ी पीना शुरू किया, अमल खाना शुरू किया, हुक्का पीना शुरू किया। लेना ही था तो अग्नि तत्व, तो उसके बिना तो जिंदा नहीं रह सकते ना आप। क्या हुआ? क्या हुआ? तो अग्नि तत्व ठीक करने के लिए क्या करना? घर में दीपक जलाना, हवन करने की प्रवृत्ति को बढ़ाना, अगरबत्ती करना, अगर आप जोत कर सकते हो तो जोत करना। ये सब पाठ हैं जी। अगर आप सूरज को सुबह सुबह देख सकते हो तो देखिए। आप देखना कि आपके अंदर जो अग्नि तत्व आएगा वो आपको बैलेंस रखेगा। तो 5 एलिमेंट जो जस्टिस गवाई साहब ने कही, मैं उन्हीं की बात आगे बढ़ा रहा हूं जी, कुछ नया नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो 5 आपके एलिमेंट्स नेचर में भी है और आपके शरीर में भी है। आपके समझ में आया? उनको आपको प्रोटेक्ट करना है। कानून की बात कुछ कर दी, अधिकतर मैं बाद में करूंगा, अभी मैं दूसरे सब्जेक्ट में आ गया। अब आप देखिए, एक एक्शन बता रहा हूं, मैं राजस्थान से आता हूं, एक एक्शन बता रहा हूं। अभी हमने एक 3-4 दिन पहले मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में मेरा गांव मेरी धरोहर करके कार्यक्रम किया। कुतुब मीनार पे हमने एक प्रोजेक्शन साइट की। वहाँ एक गांव की महिला आई, उसने कहा हमारे गांव में हमने शुरू किया है, ये एक्शन है जी और हमें करना चाहिए। उस गांव का नाम है पिपलांत्री, राजसमंद करके एक जिला है राजस्थान में। मैंने कहा क्या शुरू किया सरपंच साहब? कि हमारे गांव में कोई लड़की जन्मेगी, कोई किसी के घर में, ब्राह्मण के घर में, राजपूत के घर में, किसी मेघवाल के घर में, किसी और समाज के घर में, सरदार जी के घर में, कहीं भी जन्मेगी लड़की तो हम 111 पेड़ लगाएंगे जन्म के दिन ही। तो क्या हम ऐसा एक्शन कर सकते हैं? चलो 111 मत लगाओ, लेकिन जन्म लड़की के हो या लड़के की, जन्म होते ही 1 पेड़ लगाओगे क्या? यस और नो तो बोलिए भाई, करोगे क्या? तो ये प्लेज लेने की जरूरत है। सतनाम सिंह जी ने इसीलिए मुझे कहा कि आपको खड़े होकर के प्लेज दिलानी है, तो मैं प्लेज ही दिला रहा हूं, ठीक है। अब आप देखिए G20, ये हमारा लोगो क्या कहता है? वन अर्थ अगेन, ये आज का टॉपिक है, उसी की बात कर रहा है। वन अर्थ, वन फैमिली। काहे की फैमिली? ह्यूमैनिटी, मानवता तो सब में एक कहना चाहिए। अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंडियंस हो, कोई भी हो भाई, मानवता तो सब जगह एक है ना। अगर कहीं गिर गया, एक्सीडेंट हो गया तो खून गिरेगा, सबका रंग लाल है जी। तो वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर। अगर भूकंप आ गया तो वो ये नहीं देखेगा कि मैं इस पे तो चोट करूं और इस पे नहीं करूं, देखेगा क्या? तो हमारा एक G20 का जो लोगो है उससे भी हमें ज्ञान लेना है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। तो आज के वर्कशॉप पे कुछ 2-3 चीजें कही। एक कबीर दास जी का एक मुझे भजन याद आ गया। भजन गाऊंगा नहीं आज, मैं गाता हूं, अच्छा ऐसी बात नहीं है, लेकिन आज नहीं गाऊंगा। मैं नानक देव जी के भी भजन गाता हूं, लेकिन कबीर दास जी का काम होता था कि दिन भर काम करते थे। ही वाज ए वीवर, बेसिकली वीविंग का काम करते थे, और जो कपड़ा बुनते थे वही बाजार में बेचने जाते थे, काशी के बाजार में। बेच के आकर के जो पैसा बचता उससे वो कोई सामान लेते, कुछ घर के लिए, कुछ संतों के लिए। तो डेली उनके यहाँ सत्संग होती थी, कबीर दास जी के यहाँ। तो जब सत्संग थी तो एक किसी आदमी ने पूछा कि साहब आप पेड़ों के बारे में इतना ज्ञान देते हो, पेड़ ऐसा क्या है जी? तो ये जितने भी संत हुए उस कालखंड में, चाहे नानक देव जी हुए हैं, चाहे रहीम हुए हैं, चाहे फरीद हुए हैं, चाहे कबीर हुए हैं, चाहे मीरा हुई है, ये सब कवि थे। और ये बहुत बड़े लेवल के कवि थे, छोटे लेवल के कवि नहीं थे। तो जब कबीरदास जी को पूछा कि पेड़ों से ऐसा क्या फायदा
तो कबीरदास जी ने पद कहा। नानक देव जी के साथ तो जब नानक देव जी पद कहते थे तो गाने वाले दूसरे थे। गाने वाले कौन थे भाई, बताओ तो सही है? मर्दाना, गाने वाले अलग थे। कबीरदास जी के यहाँ गाने वाले लोग, जो लोग होते थे वो गाते थे, लेकिन अलग अवधि में। लेकिन पद ब्रज और अवधि में मिला हुआ है, आपके समझ में आ जाएगा। क्या कहते हैं कबीरदास जी? मन रे, हमारे अंदर मन भी है। हमारे शरीर के 4 पार्ट हैं मोटे मोटे, बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल। तो मन को हम जागृत करते ही नहीं है। तो कबीरदास जी ने कहा कि क्यों चिंतित हो रहे हो, रोज पूछते हो आकर के पेड़ों से क्या फायदा, क्यों पेड़ लगाएं? तो कबीरदास जी ने कहा सुनो, मन रे तू वृक्षन की मति ले। जैसे पेड़ है उसमें जैसे बुद्धि है, इंटेलेक्ट, वैसी बुद्धि तू ले। मति मन बुद्धि। यू टेक इंटेलेक्ट ऑफ ए ट्री, उसका एक अनुवाद है। क्या है वो दोवा? भजन है पूरा, लेकिन एक दोवा। काटे जिससे बैर नहीं है। जो कोई पेड़ को काटता है उससे वो बैर नहीं रखता है। इफ somebody cut it, don't have a enemy attitude. काटे जिससे बैर नहीं है, सींचे जिससे ने। इफ somebody watering it, don't have a much affection. उसे कोई प्रेम कोई पेड़ करता ऐसा नहीं। फिर क्या है? जो कोई उसको पत्थर मारे, ताहू को फल दे मन रे वृक्षन की मति ले। लेकिन हम क्या करते हैं? कबीरदास जी ने कहा हम क्या करते हैं? किसी ने हमको बोल दिया, हम उससे दुश्मनी पाल लेते हैं। इसलिए पेड़ लगाना जरूरी है। पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन देगा अलग बात है, लेकिन पेड़ की ये विशेषताएं कबीरदास जी ने बताई, वो किसी संत नहीं बताई जी। अगर आप उसको पत्थर मारते हो तो वो भी आपको फल देता है जी। तो हम ऐसा दफ्तर में क्यों नहीं कर सकते? किसी ने हमें गलत बोल दिया तो प्रेम रखो भी, उसे क्यों दुश्मनी पालते हो? ये कबीरदास जी ने कहा। लेकिन कब करोगे ऐसा? जब पेड़ के नजदीक जाओगे, पेड़ के पास बैठोगे। भगवान बुद्ध को भी पीपल के नीचे बैठने से ज्ञान आया, ठीक है ना? पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण हुआ करती थी उन दिनों में। तो ये सब जो चीजें थी मुझे बतानी थी आपको। अब मैं अमृता देवी के बारे में वैसे आपको बता दिया है, लेकिन थोड़ा जिक्र करता हूं। अमृता देवी एक लेडी थी, महिला थी, ग्रामीण, कहीं कोई स्कूल में नहीं पढ़ी हुई थी। गुरु जम्बेश्वर करके जिन्होंने बिश्नोई समाज की स्थापना की थी, 20+9, उस समय गिनती इतनी आती थी, 20 तक गिनते थे, फिर आगे नया शुरू करते थे। तो 20 नियम तो थे ग्रस्त जो बने बिश्नोई समाज के लोग, और 9 नियम थे साधुओं के लिए। तो जो 20 और 9 नियम माने वो है बिश्नोई। तो अमृता देवी उसमें से एक थी, जो उन्होंने कहा सिर साटे वृक्ष बचे तो भी सस्ता जान। ये गुरु जम्बेश्वर जी का कोट है, सेइंग है। तो अमृता देवी उनके शिष्य बन गई। ये करीब 1730। मारवाड़ का जिक्र किया गवई साहब ने। मारवाड़ का मतलब जोधपुर। जोधपुर के महाराजा के यहाँ मेहमान आ गए। मेहमान आ गए तो उनको खाना बनाना था, और मेहमान भी आ गए 30-40। तो उन्होंने कहा ये 30-40 मेहमान आ गए, इनके लिए खाना बनाना है, तो इसके लिए लकड़ी कहाँ से लाओगे? तो उन्होंने कहा एक खेजड़ली करके गांव है। खेजड़ली हमारे यहाँ राजस्थान में खेजड़ी पेड़ होता है। तो ज़्यादा पेड़ लगाए थे उन गांव वालों ने, तो उसका गांव का नाम ही खेजड़ली पड़ गया। बोला खेजड़ली करके गांव है, वहाँ खेजड़ी के पेड़ हैं, तो बोला काट लाओ। तो जिनका जिक्र सोल्जर कर रहे थे सैनिक गए, तो जैसे ही खेजड़ी काटने लगे, ये अमृता देवी, ये ग्रामीण महिला है जी, खेत में काम कर रही थी। उसको पता लगा कि मेरी खेजड़ी को काटने कौन आया है। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, तुम नहीं काट सकते, मेरे गुरुदेव ने कहा है, मैं पेड़ नहीं काटने दूंगी। कहाँ बात तो करो आप। 1730 चिपक गई। तो उन्होंने उसके कुल्हाड़ी चलाई, वो मर गई। ऐसे करते पता चला अमृता देवी मर गई। तो उस गांव के, बड़ा गांव था, उस गांव के लोग आते गए और वो
पेड़ काटने में चिपकते गए एक ही दिन में। ये मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड में कहीं ऐसा हुआ होगा। एक ही दिन में 363 अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में पुरुष और महिलाएं सिर काट दिया, लेकिन पेड़ को उन्होंने बचा लिया। ऐसी अमृता देवी के लिए मैं चाहता हूं जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। क्या चरित्र रहा होगा जी अमृता देवी का। ये सुंदरलाल बहुगुणा ने जो चिपको आंदोलन लिया है ना, ये उसी से लिया है। इनका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में भी कहा। जैसे ही उन्होंने किसी ने कहा कि इंडिया इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्बन एमिशन, तो उन्होंने कहा नहीं, आप झूठ बोल रहे हो या गलत बयानबाजी कर रहे हो। मैं उस देश से आता हूं जहां हम पेड़ों को पूजते हैं। मैं उस देश से आता हूं जहां अमृता देवी बिश्नोई नाम की एक महिला हुई जिसने पेड़ को नहीं कटने दिया, मर गई, और एक ही दिन में 363 लोग शहीद हो गए, लेकिन पेड़ नहीं काट सके राजा। जब लकड़ी पहुंची नहीं, मेहमान बैठे रहे, तो राजा ने कहा हुआ क्या, इतने लोग गए, क्या हुआ? तो एक समझदार आदमी ने कहा किसी समझदार आदमी को भेजो। तो वो घोड़ा लेकर के गया। जब देखा लाशें ही लाशें, तो वापिस गया और राजा को बताया कि वो पेड़ नहीं कटने दे रहे हैं वहां के गांव के लोग। अब वहां तो राजतंत्र था, फिर भी राजा समझदार था। उसने कहा छोड़ो छोड़ो, ऐसा हो गया क्या? इसका मतलब वो तो कोई बहुत बड़े लोग थे, ऐसा क्या हुआ, पेड़ों के बदले कट गए? तो राजा आता है वहां, माफी मांगता है। अब खेजड़ली एक फेस्टिवल होता है वहां, बहुत बड़ा इंटरनेशनल इवेंट होता है। इसकी चर्चा स्टॉकहोम में होती है, इसकी चर्चा पेरिस एग्रीमेंट में होती है, और इसकी चर्चा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में होती है। इतने बड़े नाम का जिक्र किया गवई साहब, आपका धन्यवाद और आपको प्रणाम। ताली तो जोर से बजा सकते हो आप। अगला विषय मैं छोटा ही लूंगा, बड़ा नहीं लूंगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि मैं आपको बताऊं। बाकी ये लीगल विषय वगैरह तो ये आगे में जो लेने हैं या बात करनी है, वैसे कह दिया अधिकतर। एक विषय आपने देखा होगा कि कार्बन एमिशन को कम करने के लिए स्वतंत्र कुमार जी ने मुझे कहा कि मैं साइकिल से संसद जाता हूं। आपने सुना नहीं था क्या? मैं पहला एमपी हूं जिसने प्रयास किया कि मैं साइकिल से संसद जाऊंगा। मैं एमपी था। मैंने मीरा कुमार जी के समय भी एप्लीकेशन दी, मना कर दिया कि नहीं, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते। फिर सुमित्रा महाजन आ गई, मैंने कहा मुझे साइकिल से आने दो आप, कि नहीं साइकिल को हम जांच नहीं कर सकते इसलिए परमिशन नहीं देते। मैंने कहा क्या जांच करनी है? क्या आप साइकिल पे बम लेके आ गए? तो मैंने कहा ये गाड़ी कैसे जांच करते हो? कि गाड़ी तो जांच करते हैं लेकिन साइकिल जांच नहीं कर सकते। मैंने कहा मैं गारंटी देता हूं आपको। तो मेरे राजीव प्रताप रूडी उस समय राज्य मंत्री थे पार्लियामेंट के, वेंकैया नायडू जो उपराष्ट्रपति बाद में बने, वो उस समय पार्लियामेंट अफेयर्स थे, मैं पार्टी का चीफ व्हिप था। मैंने कहा मैं आना चाहता हूं साइकिल से, मैं एक मैसेज देना चाहता हूं कि मैं साइकिल से भी संसद आ सकता हूं, संसद से साइकिल जा सकता हूं घर, और मुझे आने दो आप। तो बोला, उन्होंने कहा नहीं आ सकते। तो मैंने कहा आप एक बार, तो उन्होंने कहा एक दिन आना आप। तो एक एप्लीकेशन मेरे हाथ में आ गई। तो हम राजस्थानी लोग हैं, इतना आने के बाद मैंने ऐसे पकड़ लिया, समझ रहे हो ना मेरी बात? तो मैं डेली आने लगा। उन्होंने कहा यार डेली क्यों आ रहे हो? तो एक मीटिंग हुई। हुआ क्या उसमें कि मैं एक कार पार्किंग की जगह, जज साहब को बहुत अच्छा लगेगा, वो केस मैंने लड़ा खुद नहीं, मैं ही उसका वकील था। तो कार पार्किंग की एक जगह हमारे पार्लियामेंट में, वो 20% के लिए, 20% के लिए। तो मैं वहाँ मेरी साइकिल खड़ी करता था। तो वहाँ जो दूसरे लोग आते थे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, किसी के 60 लाख, किसी के 70 लाख की ऐसी गाड़ी। तो एक एमपी आता था, वो 1 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी में आता था, मेरी साइकिल और वहाँ उसकी गाड़ी। तो एक पत्रकार आया, उसने स्टोरी बनाई कि देखिए एक एमपी साइकिल से आता है और एक एमपी 1 करोड़ से ज़्यादा की गाड़ी में आता है। तो दूसरे दिन उस एमपी ने देखा यार ये तो गड़बड़ हो गया, तो मेरी साइकिल उन्होंने पंचर कर दी। नहीं, ये सब हिस्ट्री में है मेरे। और पंचर कर दी तो मैं
साइकिल को लेते हुए क्या, मैंने ये नहीं तुरंत आया वो गाड़ी में बैठ जाओ सर, मैंने कहा नहीं, मैं सीधा जैसे मैं सोच रहा हूँ कि अगर मेरी गाड़ी साइकिल पहले पंचर होती थी कैसे जाता, ऐसे जाता, पंचर निकालने वाला कोई मिला नहीं, राजपथ कहीं नहीं मिला, तो मैं साइकिल को लेते हुए गया। तो एक बार उस देखा ये तो मान ही नहीं रहा है, तो मेरा जो ये ब्रेक होता है ना, ब्रेक, ये काट दी उस दिन बरसात हो रही थी। बीबीसी का कॉरेस्पॉन्डेंट पत्रकार बैठे हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने कहा साहब अब क्या करोगे, ब्रेक नहीं है, कट गए। मैंने कहा ऐसे ही चलूँगा। तो मैं चल रहा था, कहीं धीमे धीमे कहीं उतर रहा था, वो बीबीसी वाला मेरे पीछे पीछे, बरसात भी आ रही थी। वो बीबीसी में भी चली मेरी स्टोरी कि ये एक एमपी है जो विदाउट फेल साइकिल से आता है, साइकिल से जाता, पार्लियामेंट टू हाउस टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट टू हाउस। मैं 20 विंडसर पैलेस पे रहता था। तो अब जब ज़्यादा बड़ी शिकायत हुई तो सुमित्रा महाजन ने कहा भाई ऐसा मत करो, आपको हम साइकिल से नहीं आने देंगे, और अगर आते हो तो साइकिल स्टैंड पे साइकिल खड़ी करो। तो मैंने कहा क्यों, कि नहीं जहाँ कार पार्किंग है ना वहाँ खड़ी मत करो। तो मैं थोड़ा पढ़ने लिखने वाला आदमी हूँ, तो मैंने देखा ये कार पार्किंग बनी क्यों थी। तो पता चला 52 में 20 ऐसे एमपी आ गए थे, 20 उस समय 20 थे, जिन्होंने नेहरू जी को एप्लीकेशन दी कि साहब हम ड्राइवर के साथ भी नहीं आना चाहते, हम खुद ही हमारी गाड़ी चलाएंगे, सेल्फ ड्रिवन व्हीकल होगा हमारा, हम किसी के साथ बैठना नहीं चाहते। वो पता नहीं उस समय हो सकता है ड्राइवर के साथ बैठना भी पसंद नहीं कर रहे होंगे, ऐसा कोई रहा। तो नेहरू जी को कितने लोग हो, कोई 20 हैं, तो नेहरू जी ने उसको ईयर मार्क कर दिया, इट इज ए प्लेस फॉर सेल्फ ड्रिवन व्हीकल। तो मुझे वो आदेश मिल गया। तो मैं सुमित्रा महाजन के पास गया, मैडम मुझे ये आदेश मिल गया सेल्फ ड्रिवन व्हीकल का, साइकिल मेरा व्हीकल है और वो मेरा सेल्फ ड्रिवन है, तो मुझे वहां खड़ी करने दो। तो मैं केस जीत गया, गवई साहब मैं केस जीत गया। और लगातार मैं साइकिल से, जब तक मैं मिनिस्टर नहीं बना तब तक आता रहा। फिर साहब ने कहा भाई सिक्योरिटी के भी कई इशू रहते हैं, लेकिन फिर भी अभी मैं साइकिल पे बहुत जाता हूँ, साइकिल में बीकानेर में भी जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ। लेकिन आप एक एक्शन ले सकते हो क्या, जब भी आपको मौका मिले आप कभी कभी साइकिल पे जाओ, इससे आप फिट भी रहोगे और कार्बन एमिशन कम करने का मैसेज भी देंगे। करोगे क्या? कभी सब्जी लेने चले गए, कभी किताब लेने चले गए, कभी यूनिवर्सिटी आ गए, अच्छा लगेगा। धीरे धीरे इसको प्रमोट करो। अभी पता है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक साइकिलिंग को कैसे प्रमोट किया? मेरे बीकानेर आए थे, आप देख रहे होंगे ना, प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं, इधर भी साइकिलिंग, इधर भी, फोटो देखा होगा ना, बहुत वायरल हुआ। और हम फिट तो इंडिया फिट, नारा लगा सकते हो, हम फिट तो, देखिए कितना बड़ा एक काम कर सकते हो। तो इसको आप भारत को आगे विकसित बनाने में, भारत के नागरिकों को फिट रखने में आप इस काम को आगे बढ़ा सकते हो। तो ये भी एक एक्शन आपका हो सकता है। एक दूसरा एक्शन है, मैं एक बार इंडिया गेट पे गया घूमते हुए, बस 2-4 मिनट ही लूंगा, कोई बोर तो नहीं हो रहे हो, चल रहा है, बस लास्ट है। तो मैं गया तो कुछ लड़कियां कुछ लड़के मोमबत्ती जला करके बैठे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हो आज, कोई आंदोलन है क्या? नो नो नो, एजिटेशन नहीं है। तो क्या है कि आज अर्थ डे। ओ, तो क्या करना चाह रहे हो? घर की बत्तियां जलाई, बंद की हमने, और हम यहां पे 1 घंटा बैठेंगे, 1 आवर इज ए 0 आवर। कंसेप्ट तो ठीक लगा मुझे। फिर मैंने सोचा क्या करना चाहिए, इस कंसेप्ट के अलावा कोई भारतीय कंसेप्ट हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे पूर्णिमा याद आई। आप भी पुराने लोगों को पूछना, हम पूर्णिमा के दिन छत पे बैठते थे, हमारे पुरखों में आदत थी, छत हो तो छत, मैदान हो तो मैदान, खीर बनाते थे, चंद्रमा की शीतलता उस पे किरणों के माध्यम से पड़ती थी और हम खीर को खाते थे, हमारे अंदर भी शीतलता आती थी और हम बहुत बड़ा एक काम कर लेते थे। सूरज तो उगते हुए देखते थे, लेकिन पूर्णिमा के दिन चंद्रमा से शीतलता हम लेते थे। तो मुझे लगा कि 1 आवर इज ए 0 आवर, ये तो साल में 1 घंटे का ही कार्यक्रम हुआ, और अगर हम पूर्णिमा का कार्यक्रम लेंगे तो साल में 12 नाइट हमें मिलेगी। तो एक कार्यक्रम मैंने हाथ में लिया है जिसको मैं हर पूर्णिमा को करता हूं, उसका नाम है 1 नाइट विथ मून लाइट।
हिंदी में आप इसको ऐसे कर सकते हो, एक रात चांद के साथ, एक रात चांद के साथ। जब मैं पांडिचेरी गया, उन्होंने कहा ये एक रात चांद के साथ हमारे समझ में नहीं आता है, तो मैंने उसको अंग्रेजी कर दिया, वन नाइट विथ मून लाइट। एक जगह मैं बिहार में था, मैंने एक कार्यक्रम किया, उन्होंने कहा ये हमारे समझ में नहीं, चंद्रमा के क्या ऐसा करना, क्या खासियत है। मैंने कहा मैंने एक टेस्ट किया, एक मेरे यहाँ कोई लड़की थी जो डिप्रेशन में चली गई, उसके पिताजी ने तय किया कि भाई आपके 98% नंबर आना चाहिए, 99 तो साल नहीं ला सकते आप, तो उसने यहाँ कर दी 98 लाऊंगी, फिर 98 नहीं आई, 91 तक रह गई, तो वो डिप्रेशन में आ गई। मुझे उसने बार बार कहा कि ये लड़की डिप्रेशन में आ गई है, पढ़ने में होशियार। मैंने कहा 91 भी बहुत है ना, आपने काहे का टारगेट ये 98 का रख दिया, लेकिन आ गई। तो मेरे दिमाग में था, क्योंकि मेरे गुरुजनों ने इसको कहा था, तो मैंने इसका अभ्यास किया, उस लड़की के साथ चंद्रमा की किरणों के साथ दिखाया। मैंने कहा देखो 1 घंटा, मैं भी बैठता था, देखते जाओ, और आप कल्पना नहीं करेंगे कि डिप्रेशन के भाव उस लड़की से गायब हो गए, चंद्रमा की किरणों से, चंद्रमा की किरणों से गायब हो गई। अब इसका अगर कोई मेडिकल साइंस का आदमी बैठा है तो इसको टेस्ट कर सकता है, और आप इसको, इसलिए हमारे पुरखे चंद्रमा की रोशनी में बैठते थे। और अगर आप खीर बनाओगे और खीर पे चंद्रमा की किरणें पड़ेगी, वो आप खाओगे तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए और अच्छा है। मैंने इसका भी कई जगह अनुभव करके देखा है। तो एक बिहार में हमने कार्यक्रम किया, पहले तो समझ में आया नहीं, जैसे ये प्रोफेसर हमारी हिमानी बैठी है, तो इस तरह के एक प्रोफेसर थे, दोनों दंपत्ति, ये चुटकुला नहीं है, हकीकत है। दोनों दंपत्ति आए, 2 घंटे कार्यक्रम सुना, चंद्रमा के भजन, चंद्रमा है क्या, चंद्रमा का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है हमारे नेचर में, हमारे जीवन में क्या, सब लोगों ने अलग अलग बोला। 200-250 लोग थे, वो बोले नहीं जी, दोनों प्रोफेसर थे, फिर दोनों, लेकिन दोनों कवि भी थे। तो उसमें पत्नी पहले उठी कि साहब ये प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा लगा, उस समय मैं मिनिस्टर नहीं था, MP था, कि प्रोग्राम तो आपका बहुत अच्छा लगा, मुझे तो आज पता चला कि ये मेरे चांद हैं। तो हस्बैंड भी उठे, वो भी कवि थे, उन्होंने कहा मुझे आज पता चला कि ये मेरी चांदनी है। तो ऐसा भी कर सकते हो ना, नहीं कर सकते क्या आप ऐसा? हैप्पीनेस को इंप्रूव करो जी। हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं जी। हम शादी करते हैं खुश रहने के लिए, लेकिन शादी के बाद खुश क्यों नहीं रहते हैं जी? चांद और चांदनी का रिश्ता कमजोर क्यों पड़ जाता है जी? इसलिए आज के इस वर्कशॉप में मुझे कुछ बातें कहनी थी, आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने बाकी चीजें ली नहीं है, वो गवई साहब ने कह दी है अधिकतर। लूं क्या उसको? वो रिपीट हो जाएगी ना। बहुत से ऐसे काम हैं जो किए हैं, अब तो आप खाना भी खाओगे। मैं अब जैसे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, ये भी बना इसी के लिए। आप देखिए द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वो भी इसी के लिए बना है। लेकिन सतनाम सिंह जी की बात को मैं धन्यवाद इसलिए कह रहा हूं कि खाली कानून से काम नहीं चलेगा जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे। इसलिए सतनाम सिंह जी को धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। बोलिए भारत माता की। थैंक यू। अपने बेजोड़ और बेशकीमती विचारों से हमें साझा कराने हेतु आपका बहुत बहुत आभार माननीय मंत्री महोदय। May I now invite Professor Himani Sood, Senior Vice President, Chandigarh University, to kindly propose a vote of thanks. Good afternoon, everyone. Sir, it will be extremely difficult to speak after you. हर किसी के हितों की रक्षा हो ऐसा विधान है, सबको जोड़कर और सुरक्षित रखे ऐसा भारत का कानून है. Good afternoon, everyone. On behalf of the entire family of Chandigarh University, I would like to extend profuse thanks to the dignitaries on the stage and a very profusely thankful message for our Honorable Law Minister. Sir, your speech has been extremely inspiring. I can just tell you that after this conference, every student, every member of Chandigarh University will work towards sustainability of environment,
You have created more sensitivity about environment in each one of us. As a proud citizen of India, I have always admired the law system of the country. It has been the strongest, the most independent law system in the world. As a woman, sir, messages like triple talaq have empowered and strengthened the belief in every woman, in constitution and the law of the country more with every passing day. I would like to just assure you that Chandigarh University stands steadfast in every endeavor of the country to make it the best place in the world and lead the world in Amritkal. Thank you so much. Thank you very much. And with that, may I please request you all to kindly rise for the national anthem. And with that, we conclude the inaugural session and we bow down with utmost sincerity, respect, and gratitude to the distinguished dignitaries on the dais for gracing this session with their gracious presence and pearls of wisdom. Namaskar. Requesting the audience to kindly remain seated. We shall first await the departure of all the esteemed guests and dignitaries. Until then, requesting all the delegates, students, their parents to kindly remain seated. And also acknowledging the Punjab Armed Police Band for the melodious symphony they've added to the session. Thank you very much. Ladies and gentlemen, just to serve you better, may we request the esteemed panelists, judges, advocates to kindly proceed from exit 1A to level 1 for lunch, and requesting the faculty members, students, and parents to kindly await a few minutes and then proceed from exit 2B to block D4 for lunch. We resume the next session at 1:45. Thank you.